Welcome, students, in the new class. Today, our topic is direction of the dB in Biot-Savart law. जहाँ तक इस लॉ का ताल्लुक है, ये हमने कल पढ़ा, जहाँ हमने इक्वेशन निकाली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल. तो वो dB हमें निकल गया μ0/4π ideal cross r divided by r cube, or you can say μ0/4π ideal sin theta divided by r square. तो आज हम इसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो जहाँ तक इसकी डायरेक्शन का ताल्लुक है, तो चूँकि यह हम देखते हैं कि dB इज इक्वल टू μ0/4π डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो इसका मतलब है जो dl एंड r है, सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द dl एंड r, दैट मीन the displacement vector, or we can say the position vector, and the length of the elementary wire or elementary conductor. So इसकी डायरेक्शन हमें पता है कि दैट क्रॉस प्रोडक्ट, जो अगर हम a क्रॉस b का निकालेंगे तो a क्रॉस b का जो होता है डायरेक्शन, दैट इज आल्सो डायरेक्शन हियर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ dl एंड r क्रॉस r, इसका भी डायरेक्शन जो है इट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल. दैट मीन इफ वी मूव a screw in our right hand and move it clockwise, it will go inwards. तो सेम इज द केस हियर. तो अगर चूँकि P जो है it will be on the left side of this conductor, then the direction of the dl and r will be outwards. And for example, when we move the screw in the clockwise direction, the screw moves in the towards the plane, and when we move in the anti-clockwise direction, it goes out of this plane or this wall. तो सेम इज द केस हियर. तो डायरेक्शन चेंज होती है रूट ओरिएंटेशन से. तो अगर P होगा ऑन द लेफ्ट साइड, देन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी away or outwards, or because away from the towards our body. तो इस तरीके से अगर हम dB को लिखेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो B होता है ड्यू टू द होल कंडक्टर, दैट विल बी B इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dB, दैट विल बी इक्वल टू μ0/4π ideal into क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब, और इंटीग्रल ऑफ आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर. तो अगर हम इस यही मैग्नेटिक फील्ड करें इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी होती है J को हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो J किसके बराबर होता है, I/A. तो I और A को dl ऊपर भी नीचे ज़रूर दे दो तो वो आएगा आइडियल डिवाइड बाई, क्योंकि A जो है A एरिया होता है और इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे आइडियल डिवाइड बाई dV, और आइडियल J इंटू dV के बराबर हो गया. तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे द dV इज इक्वल टू μ0/4π, तो आइडियल के बदले में हम लिखेंगे J dV. तो ये आएगा, इक्वेशन आएगा J क्रॉस R इंटू dV डिवाइड बाई R क्यूब. ये है मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी. तो अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो पता है वो हमें μ0/4π आइडियल क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब. तो I जो होता है दैट इज Q डिवाइड बाई T, दैट मीन Q डिवाइड बाई dt, यानी चार्ज डिवाइड बाई टाइम. तो अगर हम इसको dl से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आइडियल इज इक्वल टू Q इंटू dl डिवाइड बाई dt. dl और dl डिवाइड बाई dt v के बराबर होता है, यानी वेलोसिटी के बराबर होता है. तो ये आएगा I इज इक्वल टू आइडियल बराबर आएगा Q इंटू v. तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, आइडियल के बदले में Q इंटू v सब्स्टिट्यूट करो, तो वो आएगा μ0/4π Q इंटू v क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब. देयर आर सर्टेन फीचर्स of this Biot-Savart law. Then the first feature is ये जो applicable है, it is only applicable to the symmetrical current. जो symmetrical current उनके लिए ये applicable होता है. और दूसरा है ये कि ये जो ये लॉ हम वेरीफाई करते हैं, ये
ایکسپیریمنٹلی اگر ویریفائی کریں گے تو مشکل تھوڑا ہوتا ہے، ایزیلی ویریفائی نہیں ہوتا ہے. اور اس لیے اس کا یہ تیسری بات جو ہے یہ اپلیکیبل جو ہے، چونکہ یہ اسمال کرنٹ کے لیے بھی اسمال کرنٹ کے لیے ہی اپلیکیبل ہے، زیادہ بڑی کرنٹ کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان لاگس میں دا کولمبس لا ہوتے ہیں، جیسے کولمبس لا ہمارا ہے ایسے یہ بھی ایک لا ہے، اس میں مواصلت ہے. اور تیسرا جو ہے پانچواں، تو اس کی جو ڈائریکشن ہم نے پہلے ہی بتایا، اٹ از پرپینڈیکولر ٹو بوتھ ڈی ایل اینڈ آر، بیکاز دا ویکٹر ڈی ایل کراس آر پرپینڈیکولر ہوتا ہی ہے، جس طرح سے اے کراس بی پرپینڈیکولر ہوتا ہے اے اور بی دونوں کو. تو اگر ہم تھیٹا 0 کے برابر لیں گے تو یہ سیدھی بات ہے کہ پی ول لائی آن دا کنڈکٹر. جب یہ کنڈکٹر پر پی جب کنڈکٹر پر ہی ہوگا تو دیٹ مینس میگنیٹک فیلڈ ول بی 0. دین ڈی بی ول بی اکول ٹو میو 0/4 آر ڈی ایل سائن 0 ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائر اینڈ دیٹ ول بی 0. تو اسی طریقے سے اگر تھیٹا 90 ڈگری کے برابر ہوگا تو دین دس کرنٹ ول بی دس میگنیٹک فیلڈ ول بی میکسیمم. تب اس کا جو ویلیو ہوگا دیٹ ول بی میکسیمم. اس طریقے سے ہم یہ بائٹ ساورٹ کا لا کا ڈائریکشن اور میگنیچیوڈ نکالتے ہیں.